Hello, my dear students of Growing Soul Kids Gurukul. Hope you all are doing well and safe at your home. My dear students, so it's time for our class. All of you get ready for your studies. Our today's schedule, class 12, subject EVS, lesson 3, exercise part. Hello to you all, my dear 5th class students. A very good morning to you. So, welcome to your EVS class. So, my dear children, as you all know that this is Irene Clive, your EVS teacher. Right? Yes. So, my dear children, जैसा कि आप सबको पता है हमारा 3rd चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट फिनिश हो चुका है. और अब बताइए किसकी टर्न है? Yes, book exercise की turn है. So are you all ready for the exercise part? Okay. So first of all, open page number A20. Good. So चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने A part से. So A part का क्वेश्चन है Put a tick on the correct option. हमें यहाँ पर MCQs given हैं और हर एक क्वेश्चन के 3 ऑप्शंस हैं. उसमें से आपको सही ऑप्शन चूज करके टिक करना है. सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. सो द ऑप्शंस आर प्लास्टिक बॉटल, पॉलिथीन बैग, फ्रूट पील्स. सो कैन यू टेल मी द आंसर? येस, आंसर विल बी फ्रूट पील्स. सो उस पर टिक करिए. गुड. सो द सेकेंड क्वेश्चन इज these cannot be seen with naked eye. Houseflies, mosquitoes, microorganisms. So can you tell me the answer? Yes, answer will be microorganisms. So उस पर टिक करिए. Good. So the next question is dash is a non-communicable disease. So can you tell me diabetes, common cold or chicken pox? Yes, आंसर विल बी डायबिटीज़. तो डायबिटीज़ पे टिक करिए और जहाँ पर डैश गिवन है वहाँ पर आपको लिखना भी है. ओके. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर नो वैक्सीन फॉर दिस डिजीज एंड द ऑप्शंस आर डेंगू, हेपेटाइटिस ए, रोटा वायरस. सो कैन यू टेल मी द आंसर? येस, आंसर विल बी डेंगू. वेरी गुड. सो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं दैट इज बी पार्ट एंड द क्वेश्चन इज गिव वन वर्ड आंसर फॉर द फॉलोइंग डिजीजेस. ओके. सो द फर्स्ट वन इज इन्फेक्शन ऑफ द आई. कैन यू टेल मी द आंसर? येस, आंसर विल बी कंजक्टिवाइटिस. ओके. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज parasitic infection of the intestines. This is very easy. Can you tell me the answer? Yes, answer will be amoebic dysentery. Yes, so now come on page number A21. Yes, third question is fever and acute joint pain. Can you tell me? Yes, dengue. This is the answer. So the last question is fever, shivering and body ache. So can you tell me? This is very easy. Yes, answer will be malaria. So write down malaria there. Okay. So let's move forward to our C part, that is answer the following questions. So my dear children, आपको आपका C part अपनी EVS की नोटबुक में करना है. ओके. तो चलिए अब हम अपना नोटबुक वर्क भी स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आपको चैप्टर का नेम मेंशन करना है. चैप्टर 3 लेट्स बी क्लीन एंड हेल्दी. ओके. देन आफ्टर दैट नेक्स्ट पेज में आपको हार्ड वर्ड्स मेंशन करने हैं. सो राइट डाउन द हार्ड वर्ड्स. फर्स्ट इज इन्फेक्शियस, सेकेंड एलर्जीज, थर्ड जेनेटिक, फोर्थ पैरासाइट, fifth microscopic, sixth diarrhea and the 7th is disease. Okay. Yes, so turn your page
नेक्स्ट पेज में आपको वर्ड मीनिंग्स नोट डाउन करने हैं. ओके, यस. सो द फर्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल. सो मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज विच कैन बी डिकम्पोज्ड. सेकेंड, नॉन बायोडिग्रेडेबल, and the meaning is which cannot be decomposed. Okay, yes. Third is transmitted, and the meaning is transferred. Next is infectious, and the meaning is, can you tell me? Yes, which can spread to people. And the last word is accumulated, and the answer will be gather or build up. Okay, yes. So now let us start the question answers. Okay, so the first question is, suggest 4 ways to keep your neighborhood clean. So can you tell me the answer? Yes, first is always use the dustbins. Second, create a community garden. This is very important. Yes. Third, talk to your neighbor about a cleanup effort. Fourth, keep your storm drains clear. Okay? Yes. So the next question is, differentiate between biodegradable and non-biodegradable waste. Second, communicable and non-communicable diseases. So my dear children, सबसे पहले हम किसका डिफ्रेंशिएट करेंगे बताइए. सबसे पहले आपका होगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. सो माय डियर चिल्ड्रन, एज यू ऑलरेडी नो कि आप ये 4th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हो, राइट? यस. सो दिस वुड बी वेरी इजी फॉर यू. सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज, these are the substances which can be decomposed. And first point of non-biodegradable waste is, these are the substances which cannot be decomposed. Okay? Yes. So can you tell me the biodegradable waste examples? Yes, vegetables and fruit peels, etc. And the non-biodegradable waste examples are plastic, metals, etc. Okay? Clear? Okay. So let's move forward to the B part, that is communicable disease and non-communicable diseases. Okay. So the first point of communicable diseases is, these diseases are spread from one person to another. Can you tell me the example? Yes, common cold, etc. So, non-communicable diseases, these diseases cannot be spread from one person to another. Example, diabetes, etc. Okay? So, the next question is, list some preventive measures for mosquito-borne diseases. So, can you tell me? This is very easy question. Yes, remove unused items from open that could collect rainwater. Yes. Second point is, clean rainwater accumulated on the rooftops. Third point is, use mosquito repellent lotions. Okay? Yes. So the fourth question is, why shouldn't we share our water bottles with others? So can you tell me? Yes, we should not share our water bottle with others because it can easily spread diseases from one person to another. Okay, yes. So let's move forward to our last question, that is, name the diseases transmitted by houseflies. So can you tell me? Yes, amoebic dysentery and cholera. Okay? So my dear children, complete your work in neat and good handwriting. Okay? So all of you take care and stay blessed. Bye bye. प्यारे बच्चों, इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. My dear children, in your homework
read exercise part of lesson 3 EVS in your book and notebook. Okay, my dear students, bye-bye, take care. See you in the next class with some interesting topic. Stay at home, stay safe. God bless you.